E-Teacher is my YouTube channel, so subscribe my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। SST जनरल प्रिपरेशन के लिए आज का जो यूनिट है 8 ई-टीचर यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद। इस्लामिक लेसन है, खूबसूरत है, इनमें से बहुत से MCQ आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। Question 1. The Battle of Uhud was an extension of the Battle of Badr. Second, the Battle of Uhud was fought in which Hijri? 3 Hijri. Number 3. Who was the commander-in-chief of the Quraysh army at the Battle of Badr? Abu Sufyan. Number 4. What was the main reason for the Battle of Uhud? To revenge the defeat of Quraysh at the Battle of Badr. Next question. Abu Sufyan, the commander-in-chief, was leading the mighty of force of 3,000 warriors, 700 men in armor, 200 men on horseback. आगे बढ़ते हैं। Question number 6. What was the initial strategy suggested by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Defensive strategy allowing the enemy to besiege Medina. Who insisted on battle in the open field away from Medina? The younger elements among the Muslims. Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam agree to battle in the open field? In deference to the enthusiasm of youth. Number 9. Who withdraw 300 men from the Muslim army? Abdullah bin Ubay. Number 10. Abdullah bin Ubay was hypocrite who withdraw 300 men from Muslim army. 11. How many archers were posted by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the left flank with strict directives not to leave their post? 50. 12. The archers at the Battle of Uhud were under the command of Abdullah bin Jubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। 13. Who was the first challenger in the Battle of Uhud? Talha, the standard bearer of the idolaters. Number 14. Who killed Talha, the first challenger of the idolaters? Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. Number 15. Who killed Talha's brother when he tried to retrieve the banner? Hazrat Hamza रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. 16. What mistake did the archers at the strategic pass make? They left their post and began collecting male ghanimat. Number 17. Who took advantage of the archers abandoning their post and attacked the Muslims from the rear? Khalid bin Walid. 18. The whom did the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave the banner of Islam at the Battle of Uhud? Musab bin Umair radiallahu ta'ala anhu. 19. Who seized the sacred banner of Islam after Musab bin Umair radiallahu was martyred? Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. 20. Why did the polytheists of Makkah thank the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Choose the correct option. This is the correct option. Because Hazrat Musab bin Umair radiallahu, who resembled the Prophet sallallahu alaihi wasallam, was martyred. 21. How many martyrs did the Muslims suffer due to the archers' disobedience at the Battle of Uhud? 70. 22. What was the main cause of the heavy loss suffered by Muslims at Uhud? Negligence and disobedience of the archers. 23. What lesson does this incident teach Muslims? Never to disobey the Holy Rasul sallallahu alaihi wasallam. 24. The meaning of fury यानी शदीद गुस्सा, इसका मतलब है anger. 25. The meaning of रात कहर इंतहाई गुस्सा, rage. 26. The meaning of vengeance इंतकाम यानी revenge. 27. The meaning of ignominy यानी रसवाई जिल्लत disgrace. 28. The meaning of threshold दहलीज आगाज beginning. 29. The meaning of war ballads poems or songs about battles. 30. The meaning of the difference इज़्ज़त व एहतराम यानी respect. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 31. द मीनिंग ऑफ द हाइपोक्राइट मुनाफिक। हाइपोक्राइट मुनाफिक को कहते हैं, जिसको दूसरा मतलब है इंग्लिश में प्रीटेंडर। ठीक है, ये इंतहाई अहम है। इस तरह के सिमिलर वर्ड ज़रूर आते हैं KPPSC यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में। जो भी अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल ई-टीचर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। 32. द मीनिंग ऑफ द प्रीटेक्स्ट बहाना एक्सक्यूज़. 33. द मीनिंग ऑफ एबंडन छोड़ देना, लीव करना. 34. द मीनिंग ऑफ द पोलिथिस्ट्स बुत परस्त आइडल वर्शिपर्स.
35 द मीनिंग ऑफ द ऑब्लिवियस, बेखबर, अनअवेयर। एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। ग्लोसरी है द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ एडजर्ड, पुरजोर दरख्वास्त की, अर्ज्ड, अर्नस्टली, इंतहाई अहम है। इस तरह के सवाल ज़रूर आते हैं। 2 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ एनिहिलेट यानी डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। 3 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ बीफर्ड अप, मज़ीद मजबूत करना, स्ट्रेंथनेड। 4 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ बिलीगुअर, हमला करना या गिरना यानी ले सीज टू। 5 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ बिलीग्रेंट, जंगजू, लड़ाका यानी एग्रेसिव। 6 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ बिसीज, मुहासरा करना, अटैक कर, सराउंड। 7 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ bewilderment, हैरत, उलझन, confusion. 8 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ consternation, हैरत, खौफ, एंजाइटी और डिसमे। चलो आगे देखते हैं। 9 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ डिसिमेटेड, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉयड लार्जली। 10 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ डिसिपेटेड, ज़ाया करना या बेकर जाना, स्केटर्ड और वेस्टेड, स्केटेड और वेस्टेड। 11 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ फ्लैंक, साइड ऑफ समथिंग। 12 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ इग्नोमिनी, जिल्लत, रसवाई, शेम और डिसग्रेस। 13 द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ मैनोवर, चाल, हिकमत अमली, मूवमेंट और टेक्टिक। 14 the nearest meaning of pincer movement, attack from two sides, attack from two sides. 15 the nearest meaning of scimitar, तेजदार वाला खुमदार तलवार, sword. 16 the nearest meaning of seething, गुस्से या हुजूम से भरा हुआ यानी boiling with anger. 17 the nearest meaning of tambourine यानी musical instrument है ये, ठीक है। 18 the nearest meaning of threshold यानी entry point or beginning. Add the correct prefix to the word to complete each sentence. यहाँ पे जुमले दिए गए हैं, इसमें correct prefix लिखना होगा। I wanted to ease my stomach, discomfort, यहाँ पे comfort हो जाएगा, ठीक है ना। Dis को connect यानी ख़त्म करना। So I drank some ginger root tea. Number 2, मुतासिम looked funny and has mismatched, matched short and pants, यहाँ पर ये prefix है और इनसे suffix इस तरह बन जाता है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं कि क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। शी सेड दोस एंटी एजिंग क्रीम्स, ठीक है ना, ये नोट करें। डू नॉट वर्क सो दी शुड नॉट वेस्ट माई मनी ऑन देम। नंबर 4 द चाइल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट अलार्म्ड हिज पेरेंट्स, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड से ये सब स्टैंडर्ड बन जाएगा। नंबर 5 व्हेन माई सिस्टर फर्स्ट सा दी मीटर शी थॉट इट वाज सुपर नेचुरल phenomenon. 6 even though she got an excellent job offer, Aisha did not want to relocate to a different country, यानी locate से relocate prefix बन जाएगा। 7 with a small class size that students get to interact with the teacher more frequently. Number 8 I slept on the ice because I did not heed the precautions about watching my step, यहाँ पर pre जो है ये prefix है। A noun combatant and another word for civilian, non-combatant, non prefix। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द क्लासेस ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंस एंड गिवन कॉलम्स। इफ आई एम लेट फॉर क्लास माई टीचर गेट्स एंग्री, ये क्या बन गया? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। यानी व्हेन ही स्टेज अप वेरी लेट ही इज वेरी टायर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। नंबर 3 पीपल गेट हंग्री इफ दे डोंट ईट, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, यानी ये दोनों कुल मिला के एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। नंबर 5 व्हेन शी वॉचेस अ मूवी शी लाइक्स टू ईट पॉपकॉर्न, यहाँ पर ये जीरो कंडीशन सेंटेंस बन गया। नंबर 6 व्हेन आई क्रॉस द स्ट्रीट आई ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट, ओके। नंबर 7 आई कैन नॉट डू माई होमवर्क इफ आई डोंट हैव माई ग्लासेस। नंबर 8 ही ऑलवेज स्माइल्स व्हेन ही इज हैप्पी, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस बन गया। Number 9 if I miss the bus I take a taxi to work. Number 10 when you make lots of noise the librarian gets angry. 11 tea tastes sweet if you add some sugar. Number 12 you should eat less if you want to lose weight. if ज़रूर होगा, ठीक है, या स्टार्ट में जब होगा यहाँ पर आप देख लें, स्टार्ट में if है, if I miss the bus, तो फिर आप बाद में if नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये if जो है ये इसकी पहचान है कंडीशनल सेंटेंस का, ये इंतहाई अहम पॉइंट है, आप इसको नोट करें। और यहाँ पे स्टार्ट में एफ नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में बनाने के लिए तो एफ को ज़रूर लगाना होगा, तो समझ लेना कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। नंबर 13 आई ऑलवेज टेक माई अम्ब्रेला
when it rains. Number 14, when I'm sad, I watch a funny movie. 15, when he cleans the house, he listens to music. Search the following words related to economy in an authentic source and write the correct word in front of its meaning below. Bankrupt, investment, budget, capital, cost, economics, consumer, fiscal, inflation, deposit, deficit, फाइनेंस, क्रेडिट, करेंसी, रिसेशन, स्टॉक. इसको आप जुमले में इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना. क्वेश्चन 1 है अ कंटिन्यूअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना. अ कंटिन्यूअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन्फ्लेशन यानी महंगाई. सेकेंड, अ पीरियड ऑफ टाइम, a period of time in which there is a decrease in economic activity and many people do not have jobs, recession. 3, a person who buys goods and services, consumer. 4, a science concerned with the process or system by which goods and services are produced, sold and bought, economics. 5, an amount such is an amount of money that is less than the amount that is needed, deficit. 6, an amount of money available for spending that is based on a plan for how it will be spent, budget. 7, money that a bank or business will allow a person to use and then pay back in the future, credit. 8, money, property, etc. that is used to start or operate a business, capital. 9, are relating to money and especially to the money a government, business or organization earns, spends and owns, fiscal. 10, the act of using money to earn more money, the act of investing money, investment. 11, the money that a country uses, a specific kind of money, currency. 12, the price of something, the amount of money that is needed to pay for or buy something, cost. 13, the supply of goods available for sale in store, stock. 14, the way in which money is used and handled, finance. 15, to put money in a bank account, deposit. 16, unable to pay debts यानी bankrupt. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी. तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब ई टीचर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें. और कोई भी मसला हो, सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. शुक्रिया.